Okay, so we are live. Hi everyone and welcome back to Lemon's लाइव सेशन जहां हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, देखते हैं स्टॉक एनालिसिस और सीखते हैं कुछ नया। मैं हूं संदीप चौहान और मेरे साथ हैं लेमन के हेड ऑफ रिसर्च सतीश। तो जैसे कि आप सभी को लास्ट सेशन काफी ज्यादा पसंद आया था और साथ ही हमें काफी सारे रिक्वेस्ट भी आई थी कि सेशन को इंग्लिश में रखने की, तो ये सेशन हम हिंदी और इंग्लिश में रखने वाले हैं। आपको लेमन के बारे में भी बता देता हूं। तो लेमन एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज फर्म है जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को इजी बनाता है। लेमन की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, लेमन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जहां से जाके आप लेमन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो सतीश, आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? ऑल्सो एक क्वेश्चन जो आई आई नो फॉर श्योर सारे इन्वेस्टर्स को है कि क्यों मार्केट गिरा हुआ है और क्यों हम सबके पोर्टफोलियो रेड है। Yeah, thanks, Sandeep. Hello, everyone. Thanks for having me. And so, if first I'll come to the what all we cover in this session. So, we'll have a broader overview on what's happening in the markets over the last 3 to 4 months. I'm sure everyone is aware that markets niche ja rahe last 2 3 months se especially. And we will talk about what are the key factors driving it and what should we look forward to understand the next direction yahan se. And also abhi earning season has started over the last 1 week or so. You can see IT companies have come out with the earnings. So we will review or at least have a deep dive into key takeaways so far from the earnings that have come out from the major IT names, and what it means for the IT sector going forward. Of course, we'll also answer few of the queries that our users have asked, be it stock specific or in general market at the end. So coming to your second question, so if you can see the slides, so I've prepared a brief slides as well for our session. So our markets have entered a correction territory. अभी So आई थिंक स्लाइड्स दिख नहीं रही हैं इफ यू आर शोइंग। yeah, I think I think it's now visible. I यस यस hope. यस। Okay. So for the second question, why our portfolios are red? So it's not just our portfolios. Overall, you can see that entire markets have come down sharply over the last 3 4 months. So markets, if I can say, it has peaked or it hit all-time highs around late September. Since then, you can see the chart where not just the broader benchmark Nifty 50, but broader mid and small cap indices also have come down sharply. So they are down anywhere between 12 to 15%. So it's natural that most of our portfolios are also blinking red now. हेलो, आई एम Yeah. ऑडिबल? आई थिंक Yeah. कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। सो So it's like broader markets have corrected. So naturally our portfolios are also in the red. If I continue and understand what are the factors that kind of led to this downfall. So you can see the chart. First and foremost, on the left, you can see our economic growth has been also slowing down sharply. So we had around 8.5% growth rates in 2023. However, if you see 2024, there is a sharp slowdown, a gradual slowdown throughout the year. With the last quarter, Q3 2024, we are having a growth of just 5.4%. So what happens when the economy is slowing is the corporate earnings also slows down. So that's one of the reasons why the markets have started coming down, because the last quarter earnings were one of the weakest over the last 2 years. Our earnings have grown only just 4% compared to double-digit growth we have seen over the last 2 years. So few factors that led to this growth slowdown is we had general elections. Typically during the election season, government spending will be lower. So that is one factor which has weighed on the manufacturing and construction segments. Then also inflation was higher. As inflation is higher, we have seen some slowdown in the urban consumption story. So that also had led to a broader slowdown in the economy overall, which ultimately impacted earnings, which is very important for the stock market. On the second, you can see the right hand chart. Foreign outflows have been very sharp. About 1 lakh crores worth of shares were sold in the last quarter by foreigners.
in our markets, and that continued in the new year as well. So far, in just 2 weeks, so far till Jan 15, we have seen selling to the tune of almost 35,000 crores by foreign investors. Now, this will have obviously a natural impact on our markets also, as there is more and more selling. Markets continue to get impacted, moving lower. Uh, Two reasons primarily. One is foreign investors initially around October were rebalancing their portfolios towards China markets. They are exiting our market and investing in China, because Chinese government has announced some stimulus measures to help their growth. While Trump election, especially, which is the major factor of late, uh, has led to a stronger US dollar and expectations of continued strong growth in the US market. So foreigners are moving their money back to the US markets. So that's one of the reasons also. And fundamentally, because our earnings have reduced in the last quarter and our growth has slowed down, valuations for the market have been expensive. So that's also one factor for foreigners to exit Indian market and move to US market. So Okay. these factors have led to the sharp downfall that we have seen in the markets. तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में भी उन्हें एक्सप्लेन करें, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि जैसे सतीश ने बताया कि 2 मेजर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मार्केट्स नीचे हैं। पहला तो इंडिया की जीडीपी स्लो हो चुकी है, जैसे कि आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दूसरा जो मेजर रीज़न है कि एफआईआईज़ अपना जो पैसा है वो इंडियन मार्केट से निकाल के दूसरे मार्केट्स में लेके जा रहे हैं। जैसे कि यूएस मार्केट में वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प जब से आए हैं तो चांसेस हैं कि कुछ पॉजिटिव पॉलिसीज आएंगी और ट्रेड वहां पे ज्यादा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमें मार्केट्स गिरने को दिख रहे हैं। ओके, सो सतीश, मूविंग अहेड मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब मूविंग फॉरवर्ड क्या लगता है आपको कि क्या मार्केट इससे थोड़ा बेहतर होगा या बेटर स्टेट में जाएगा? Yes, going forward, so what to watch out? Like some of the factors, obviously, this all started with the weakness in the earnings in the last quarter. So, abhi hamara Q3 earnings needs to be keenly watched, how the corporate announcements and management guidance is going to be. So that will help markets to gauge कितना impact और हो सकता है earnings में, or is there any turnaround. Next will be from government side. We have budget coming on Feb 1st. This will be the first full-term budget of this government. So whatever growth slowdown happened due to lower government spending, probably any indication of strong capex or infrastructure spending announcements, along with tax relief potentially, maybe to put more hands in the consumer to revive the consumption story. Those measures will probably help markets also improve the sentiment towards the growth going forward. And along with that, we also have RBI meeting in February. This will be the first meeting of this year, as well as under the new governor. So we have a new governor in December for RBI. And so the expectation again here is that because growth is slowing down and inflation is around 5%, maybe the priority will be for to help revive the growth. As such, maybe if there is any interest rate cut from that meeting, that will be a big boost to the market sentiment as well. Along with these domestic factors, one more key factor to watch is how Trump will, once he is elected next week, sworn in, how will his trade policy will be for global factor that is keen to watch out as well for markets. ओके, तो जैसे कि सतीश ने बताया कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट में ग्रोथ आती है या फिर मार्केट सेम ट्रेजेक्टरी पे चलेगा। पहला रीज़न है इसकी Q3 अर्निंग्स आने वाली हैं और काफ़ी सारे सेक्टर्स की आ भी चुकी हैं, जैसे कि आईटी, जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। सेकेंड जो फैक्टर है वो है बजट। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा बजट आने वाला है एंड चांसेस हैं कि ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कैपेक्स को भी बढ़ाएगी, विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन ऐसा भी माना जा रहा है, सतीश को लगता है कि शायद हम जैसे टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है, बट क्या सच में मिलेगा वो तो देखने वाली बात है। देन नेक्स्ट फैक्टर ये है कि आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए हैं, जो कि पॉसिबल है कि बैंक के रेट कट्स भी हो जाएं, जिससे कि बोरिंग ज़्यादा बढ़ जाए, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाए और स्पेंड भी ज़्यादा हो, जिससे कि मार्केट को एक पॉजिटिव पुश मिलेगा। और जो लास्ट फैक्टर है वो है ट्रम्प ट्रेड पॉलिसी। सो
जैसे कि आप सभी को पता है कि यूएस में इलेक्शंस हुए थे और जो नए प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब मार्केट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ट्रंप क्या पॉलिसीज लेके आते हैं और वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट को फेवर करेंगे। कूल। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे आईटी स्टॉक्स के अर्निंग्स आए हैं सामने, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। Yeah. So if you see the slide, this is a simplistic overview so far of the IT earnings. So typically, earning season start with the IT companies. They are the first ones to release the quarterly earnings. So far, I'm taking Nifty IT as a benchmark here, just to be clear. So we have about 10 companies in that. They are broadly representing the overall IT sector in the Nifty index. So if you see, we have almost 50% of the companies have come out with the results, including the big names, TCS, Infosys, HCL Tech. So rest of the 50% we are yet to see. Of them, Wipro and Tech Mahindra, we have the earnings actually later today. The other three, Coforge, Emphasis, or Persistent, these will be coming out next week. But so far, we have seen TCS, HCL Tech, Infosys have come out with the earnings, and on an EPS level, on the earnings level, they have actually beat the estimates. This is as per the LSEC platform data that we have. So as per those estimates, they have actually delivered better than the market expectations. However, on the flip side, we have seen L&T Technology Services and LTI Mindtree. These two IT stocks have actually delivered below the estimates that were there for the earnings. आई This थिंक is the बिलो high level overview. Yeah. So far, it's a mixed. If I can summarize simply, it's a mixed takeaway for the sector overall. ओके, सो मूव करते हैं और देखते हैं अर्निंग्स को और क्लोजली। Yeah. So you can see this table here actually highlights what is the revenue growth for each of the company that has delivered earnings so far, and how the profit growth has been compared to the revenue growth, and the margins as well. And another important metric for IT industry to track is what is the deal pipeline. So whatever I on the rightmost I see total contract value, that is basically the आने वाला deal pipeline which is to be executed in the coming quarters. So if ओके, you see simply for the revenue and net profit columns, I have highlighted few names, few numbers in the red color. For example, TCS, HCL Tech, revenue is highlighted in the red, meaning they have actually come lower than what market was expecting on the revenue metric. So overall, you can see earnings have grown around 5 to 6% on average, if I can summarize for this table, while the net profit for the big three names so far, TCS, Infosys, and HCL Tech, the earnings growth, profit growth has been much better, around 5 to 6%. Infosys actually have a double-digit revenue earnings beat. On the mid-tier names like L&T Tech Services and LTI Mindtree, it is actually degrowth that we have seen in this quarter earnings. L&T Tech is down, profit is down about 4%, while for LTI Mindtree, the profit is down about 7%. Overall margins were again stable. So one more important point to highlight here is Q3 is a seasonally weak quarter for IT companies. When I say seasonally weak, because it is most of our IT companies derive their business or revenue from US markets. And since Q3 last quarter has a lot of holidays, and because of Christmas and other shutdown that happens during December, so it is a weak quarter for business growth as well. But despite that, our companies, so far we can see that they have maintained margins, also TCS, Infosys. For the mid-tier companies like LTI, Mindtree, we have seen some margin impact. The margins were down about 1.3% and 1.6%. However, the other key metric, as you can see, the deal pipeline. So TCS has achieved its highest ever deal pipeline. So about $10.2 billion worth of deals are signed and are in the pipeline to be executed by the TCS, while the numbers for Infosys at HCL Tech are around $2.5 billion.
For the mid-tier companies, L&T and LTI, it is around 200 million and 1.7 billion dollars. So this is like a broad overview. What it tells us is that revenue growth and profit growth is somewhat above estimates for some companies, especially for Infosys. For the mid-tier companies, it's slightly below on the profit. And overall, in a seasonally week three, overall it's a better reading for me so far. ओके, तो मार्केट्स के अर्निंग से देखने के बाद आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट आर द हिट्स एंड मिसेस, व्हाट सपोर्टेड द इंडस्ट्री एंड व्हाट वेंट रॉन्ग? So if you see market reaction, so I've included how each of the companies' share price reacted to the earnings that have come out so far. So you can see, despite L&T Tech not meeting the estimates, share price has appreciated actually more than 8% immediately after the results. While TCS also, I mean, TCS, the overall earning summary was in line with the market estimates. TCS also had a positive price reaction of about 5.6%. However, on the flip side, Infosys has actually beaten the estimates. However, today, if you see market, last I checked, the stock is down 5% in today's market. Same goes for HCL Tech. They have largely meet the estimates, but stock price was down 9% post the earnings. So there is a varied price reaction. This is because of the expectations factor. So market, despite the estimates, market is also always forward looking. So managements in their earnings calls have given some guidance on how the business is going to be in the coming quarters. So for some companies, the management has projected an optimistic guidance overall, which was rewarded by the investors in the price action. However, despite past quarter earnings beating the estimates, on the future guidance, it was below the street estimates for some of the companies like Infosys and HCL Tech, which has led to the negative price reaction. Overall, as I can summarize in this slide, TCS, because of the strong deal pipeline and strong management guidance, in fact, they are saying FY26, आने वाला fiscal year, the performance will be much stronger, and as they execute this large deal pipeline. So that was received positively by the market. On the flip side, Infosys, what happened is the earnings came just last evening. So overall, on the numbers perspective, they have delivered better than what market was expecting, but the quality of the earnings also matters here. So a lot of third party revenue contribution has helped the earnings here. So that's what led to a negative price reaction, because this is not a durable earnings growth, so it can reverse in the next quarter. And in fact, in the management call, they have agreed that maybe Q4 sequentially this quarter, Jan to March, might be weaker. As such, you can see that stock price was pretty hammered in today's session. Okay. So this is how the market so far has received the earnings in the delivered companies. Okay. फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखता है इस अर्निंग के बाद? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेक्टर? So before talking about the future outlook for sector, I have to give one more perspective here. IT, despite the market fall, relative basis pay, it has actually outperformed in the last 3 to 6 months. So Nifty 50 is down more than 10%, while IT has actually not fallen that much. It was holding better than Nifty 50. So some of it is now already baked into it, the positive outlook for the IT sector. From the management commentary, I can see that there are signs of demand recovery in select segments, especially banking and finance. BFSI vertical is the biggest vertical for some of the IT companies, and they are seeing that they are seeing demand recovery. But that's what management are indicating. And the deal pipelines, that is also being reflected in very strong deal pipelines. Almost all the common theme across the earnings that have come out so far is they have signed big deals, and they are optimistic of continuing this building the deal pipeline strongly in the coming quarters. Along with the business, another
tailwind for the sector. When I say tailwind is favorable factor, is that US growth is expected to remain strong, and as such US dollar as a currency is remain stronger. These two factors are positive for IT sector and unique to the IT sector in the sense that our IT companies earn their business and in turn revenue from US market. Majority of them, bulk of revenues come from US. So stronger US growth means stronger business potential for our IT companies, and stronger dollar means our revenues, the companies that gain the US dollar revenue, when they turn it back into INR, it is a big boost because of the stronger dollar. So these factors are the positive factors that can help IT sector continue to do well in the coming quarters, in my view. Along with that, I also have to highlight few risks. One will be the Trump trade policies, and there is a huge debate on H-1B visa program recently in US. If there is any drastic change from the administration in US regarding H-1B visa program, can be a big risk on how it will impact the business, because most of our IT companies rely on the H-1B visa program by sending on-site employees for the projects. The Okay. other factor will be rate cuts. If there is any delay in rate cuts from US Fed or RBI, that will also be a headwind for the IT sector. ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ ऑडियंस के लिए, थोड़ा हिंदी में उन्हें समझा देता हूँ। तो आईटी सेक्टर का आउटलुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पहले तो 3 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और 2 नेगेटिव फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स ये हैं कि डिमांड रिकवरी है, काफ़ी सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं, जिन्हें आईटी सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट है। तो उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन भी देखने को मिल रही है। जैसे कुछ पहले की स्लाइड्स में दिखाया कि टीसीएस के पास $10 बिलियन की डील पाइपलाइन है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं। उसके बाद यूएस ग्रोथ हो रही है काफ़ी ज़्यादा और आपको पता ही होगा कि इंडियन आईटी सेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा मार्केट यूएस ही है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब जहाँ रुपये के कंपैरिजन में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये हमारे लिए, आम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, बट आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनके सारे इनवॉइसेस यूएस डॉलर में होते हैं, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब जो 2 नेगेटिव फैक्टर्स हैं, वो ये हैं कि पहले तो रेट कट्स में काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है। उसके बाद ट्रम्प भी हो सकता है कि कुछ ट्रेड पॉलिसीज़ चेंज कर दें, जो कि शायद आईटी सेक्टर के फ़ेवर में ना हो। देन एक और फैक्टर ये है कि H-1B वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी भी शायद चेंज हो सकती है, जो कि अगेन आईटी सेक्टर के फ़ेवर में नहीं हो। कूल, अब आगे बढ़ते हैं। तो सतीश, अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर्स को होल्ड करना हो, अगर मैं चाहूँ कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ, तो कितना परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो शुड बी इन आईटी स्टॉक्स? So I would say IT is one of heavyweight sectors in the benchmark Nifty 50 also, and given the outlook and the positive factors outweighing the negative risks, in my view, maybe we should have more allocation than what we have in benchmark. So if I remember, I think it will be around 20% for IT in Nifty 50, roughly around 20% maybe, and maybe we can have more than that in our portfolios. ओके, थैंक यू सो मच। ऑल्सो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि लेमन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट इन सेक्टर्स करके एक फीचर है लेमन ऐप के ऊपर, जहाँ से जाके आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाइए और अभी डाउनलोड करिए। ठीक है, अब लास्ट सेशन में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, तो आई थिंक उन्हें अब एड्रेस करना चालू कर देते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन था कि कैसे ग्लोबल वॉर इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट्स को, इसके बारे में आपको क्या लगता है? Yeah, that's a good question, Abhi. We have seen headlines hitting in last couple of days that there will be a ceasefire deal between Israel and Gaza also, which is actually a very welcome positive development in my view. For markets also, overall, I think in 2022 when Russia-Ukraine war broke out, there is a sharp reaction in the markets on the negative side because of the ensuing inflation worries and all of that. But now, if there is any potential ceasefire deal between Russia Ukraine also in the future, which Trump is also talking about, possibly without any further escalation, hopefully in the conflicts, we can see it as a positive factor for markets. Primarily,
especially if you talk about Middle East, oil prices are very sensitive to developments in the Middle East. Agar if um, uh, whatever ceasefire deal that has agreed between Israel and Gaza, if that holds, that means there will be minimal disruption or potential disruption to the oil flows from there. So that is actually that will bring down or reduce the pressure of higher oil prices. And given we are an oil dependent economy which imports majority of our oil consumption from abroad, so any reduction in war or hostilities in the Middle East is a positive for Indian markets. Also, Okay. any Russia Ukraine peace deal will also be potential positive for global markets and also Indian markets. Okay. So next question में मूव करते हैं. Which sector is good for investment in 2025? ये पूछा है श्रीनिवास ने. So as we just talked about IT, I mean on a bigger sectoral level, if I have to talk about IT looks decent in my view, and along with that, probably banking may we can look at private banks. They have a very they run a very better franchises in terms of managing the slippages on NPAs and all. So they maintain that discipline in lending. So private banks, because they are also relatively attractively valued in my view compared to other segments. These are the two major sectoral level bets, I would say. And also obviously budget is coming, and if there is any renewed push on capital and infrastructure spending, we can also look at some segments which have already run up a lot previously and have come down in this fall, probably infrastructure oriented capital goods or railway related stocks, which I think yesterday also have rallied. But those are very theme and narrative based stocks, highly dependent on what is going to happen on the budget side and government priorities. But broadly, I can say right now the IT and financials and especially private banks look relatively better for me. Okay. Next question. सुकांत ने पूछा था कि ITI is in loss, तो इसे होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए. So I think my colleague Gaurav is also in the call, so he will take that one. हाय हाय गौरव. गौरव, एक मिनट आप ये स्टार्ट करो, उससे संदीप. पहले मैं ऑडियंस को इंट्रोड्यूस तो कर दूं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग पिछले वाले सेशन में ही थे. तो गौरव लेमन के रिसर्च एनालिस्ट हैं. लास्ट सेशन में हमने कुछ स्टॉक्स को एनालाइज किया था. तो आज के सेशन में भी कुछ स्पेशल है जो मैंने आपको बताया नहीं था. तो उसके लिए हमारे साथ गौरव है. सो गौरव, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आप ही देने वाले हो. बताइए क्या करना श्योर, चाहिए मैं IT. अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ. अगर विजिबल हो तो मुझे एक हिंट दीजिएगा. मेरी स्क्रीन विजिबल है? अभी नहीं. ओके. अभी यस. ठीक है. तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने आईटीआई देखा. एक बार टेक्निकली देख लेते हैं स्टॉक कैसा लग रहा है. अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दी थी 224 से लेके 500 तक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो आप देखोगे कि ये काफ़ी टाइम अपने ओवरबॉट जोन में आया है जहाँ पे इसे सेल किया जा रहा है. जैसे आपने यहाँ पे देखा तो एक सेल किया, फिर यहाँ पे सेल किया. अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है यहाँ पे. तो डेली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी हमें सेलिंग प्रेशर में लग रहा है. जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मेरा एस्टिमेट है कि अगर उनका लॉस कहीं भी 0 से लेके 30 के बीच में हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी अगर आईटीआई होल्ड किया होगा पीक पे तो उनको 30% का लॉस होगा. लेकिन अगर उन्होंने अभी कुछ रिसेंट टाइम में लिया होगा तो उनको 10-12% का लॉस हो सकता है. टेक्निकली तो ये है. लेकिन अगर फंडामेंटली स्टॉक को देखें तो स्क्रीनर पे अगर हम जाएं और फिर देखें कि आईटीआई कैसा चल रहा है, तो हम देखते हैं कि इस पे कि आईटीआई अगर इसके रेवेन्यूज और हम सेल्स फिगर देखें तो आईटीआई ने सितंबर 2023 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 4x का सेल्स किया है. और उनके नेट प्रॉफिट्स भी बहुत ही श्रिंक हुए हैं. लॉसेस जो थे इनके 126 करोड़ के लॉसेस थे, वो 70 करोड़ पे श्रिंक हुए. तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप जब देख रहे हो तो -21 से 1 तक की तरफ गया है. तो सेक्टर स्टॉक अच्छा कर रहा है. अगर हम देखें कि किस सेक्टर में है, तो ये सेक्टर
इन्होंने पकड़ा है कि ये जनरली क्या करते हैं कि ये जैसे हम अभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का काफ़ी पुश है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और ये सब, तो जैसे आप स्टॉक देखेंगे केन्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, तो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मोबाइल्स अभी। और जब ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं तो इनको टेस्टिंग भी चाहिए होती है, तो टेस्टिंग के लिए आईटीआई एक सप्लाई चेन का एक पार्ट बन रहा है इनके। तो ये अच्छा एक सेक्टर है जिसपे आईटीआई अभी है। अगर आप थोड़ा-सा न्यूज़ फ्लो देखेंगे इसमें, तो आपको ये दिखेगा कि जनरली इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए हैं। लास्ट अगर आप कुछ महीने देखेंगे, तो इसमें कई ऑर्डर्स आए हैं, आईटीआई को कई ऑर्डर्स मिले हैं और गवर्नमेंट ने भी इसको थोड़ा-सा रिवाइव करने की कोशिश की और इसमें कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खराब नहीं है और हो सकता है कि अभी रिवाइव भी कर जाए। ये आपको वापस हो सकता है कि टर्न अराउंड आपको दिखने को मिले, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की स्टोरी है। लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा-सा एक पर्सपेक्टिव है जहाँ पे आपको इसमें थोड़ा-सा देखना चाहिए और जब भी आप कभी भी स्टॉक खरीदें, तो आप एक छोटा-सा आरएसआई इंडिकेटर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये ओवरसोल्ड ज़ोन में ना जाए। गॉट इट। ठीक है, अब आई थिंक पिछले सेशन थे जो हमारे ऑडियंस से हमसे पूछे थे, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स थे, पहला था आई थिंक ज़ोमैटो और दूसरा था टाटा स्टील। हाँ जी, गौरव। श्योर। हाँ, तो हाँ, सॉरी आप ड्रॉप हो गए थे, तो मैं हाँ, तो लास्ट टाइम सेशन में हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे, एक ज़ोमैटो को एनालाइज़ करने के लिए और एक टाटा स्टील को एनालाइज़ करने के लिए, तो एक बार वो भी देख लेते हैं चलिए। स्क्रीन विज़िबल? नॉट येट। यस, यस। ठीक है। तो ज़ोमैटो का मैं एक बार चार्ट खोल लेता हूँ। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ज़ोमैटो को, तो इन्होंने एक बहुत अभी जैसे मार्केट सेलिंग प्रेशर में था, तो ये 228 से लेवल पे आके एक अच्छा रिबाउंस दिया है इन्होंने 240 लेवल तक का। और जब आप इसके न्यूज़ फ्लोज़ को देखेंगे, तो अभी आपको दिखेगा कि ज़ोमैटो को सीएलएसए, जो कि एक अच्छी रेटिंग फर्म है, उन्होंने अपग्रेड भी किया है 400 के लेवल पे। तो सीएलएसए एक्सपेक्ट कर रही है कि ज़ोमैटो 400 जाएगा, जो कि अभी शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ज़ोमैटो का प्राइस 400 हिट करने की सीएलएसए बोल रहा है कि जाएगा। अगर इसको थोड़ा-सा फंडामेंटली देखें अपने ज़ोमैटो को, तो ज़ोमैटो में हम देख सकते हैं कि इसकी पी 322 की है, व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट ज़ोमैटो जैसे एक हाइपर ग्रोथ कंपनी को हम वैल्यूएशन पी पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसका सेल्स और प्राइस भी देखें, तो आप देख सकते हो कि सितंबर 2023 से सितंबर अभी तक ही इसने ऑलमोस्ट पौने 2 गुना का ग्रोथ किया है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो 5 गुना का 4 गुना का नेट प्रॉफिट इन्होंने ग्रो किया है। और अभी हमें एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि न्यूज़ फ्लो में कि ज़ोमैटो छोटे-छोटे ऐप जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और एम्बुलेंस सर्विसेज़, ब्लिंकिट, ये सारे चीज़ों को आगे ग्रो कर रहा है। इन्होंने एक अच्छा कस्टमर बेस बना लिया है, जिससे वो अब ट्राई करेंगे कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे काम कर सकें। वो सेम कस्टमर बेस डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, वो सेम कस्टमर बेस और उनके जो नए सर्विसेज़ आने वाले हैं, उनमें जाएँगे। तो ग्रोथ बहुत शानदार दिख रही है फ्रॉम अ कंपनीज़ के बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसमें यही है कि एग्ज़ीक्यूशन वो कितना कर पाते हैं। क्या जैसे उन्होंने ज़ोमैटो और ब्लिंकिट को ग्रो किया था, क्या वो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट को भी ग्रो कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? ये हमें देखना पड़ेगा कुछ आने वाले टाइम में। तो अभी ज़ोमैटो की भी अर्निंग आनी बाकी है, इस बार देखते हैं अर्निंग्स कैसी रहेगी। एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी अर्निंग्स रहेगी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ज़ोमैटो इज़ अ गुड शेयर फॉर अ ग्रोथ इन्वेस्टर, थोड़ा-सा रिस्की है, लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा शेयर है। ओके। देखते हैं नेक्स्ट टाटा स्टील, जो यूज़र ने पूछा था कि टाटा स्टील कैसा दिख रहा है। टाटा स्टील अगेन बहुत ही वीक दिख रहा है चार्ट पे, अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग पैटर्न में दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। इवेंचुअली अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये बहुत ही वीक दिख रहा है, आप देखोगे तो इन्होंने अपने सारे ईएमए 40 तोड़ दिया है, ईएमए 10 तोड़ दिया है, शायद अभी अपने ऑलमोस्ट आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाने पे है। मैकडी भी आप देखोगे तो काफी मोमेंटम डाउनवर्ड्स की तरफ है। तो टाटा स्टील अभी काफी वीक है। अगर किसी को इस पे एवरेजिंग करनी है, तो एक अच्छा सप्लाई ज़ोन जो मुझे दिख रहा है वो है 100 के आसपास के लेवल का। अगर आप ये देखोगे तो ये 100 के लेवल पे इसने काफ़ी बार आके अपना सपोर्ट बनाया है यहाँ पे। तो ये 105, 106 इज़ अ गुड प्राइस पॉइंट टू एवरेज, अगर किसी के पास ऑलरेडी पड़ा है तो। दूसरा, अगर इसको हम फंडामेंटली देखें तो टाटा स्टील भी मेरे ख्याल से जो पैरामीटर्स है, पी रेशियो 53.4 का, अच्छे खासे आरओसी तो नहीं है, आरओई
भी बहुत ही 6.55 का खराब है। इसका अगर हम देखें कि मीडियन पी क्या चलता है, अगर मैक्स आउट करके देख लें, तो मीडियन पी समवेयर अराउंड 9.5 रहता है। स्टील इंडस्ट्री में जनरली यही होता है मीडियन पी, क्योंकि ग्रोथ इतना नहीं है, दे वर्क ऑन मोर ऑफ वॉल्यूम। तो इसलिए आप अगर देखोगे तो अभी 50-55 के पी पे काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक है ये। इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, तो ये सेक्टर थोड़ा साइक्लिकल है। तो मतलब जब भी आप देखोगे तो इसकी 5 साल की साइकिल रहती है स्टील की, और 5 साल पे ये अच्छा परफॉर्म करता है, फिर ये डाउन परफॉर्म करता है, फिर अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये एक स्टील का बिहेवियर है। दूसरा एक हम देख रहे हैं कि इसमें हुआ क्या कि 2020 में कोविड आया, चाइना के सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, टाटा स्टील को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, क्योंकि डोमेस्टिक में हम जनरली चाइना से इंपोर्ट करते हैं स्टील। अब हो रहा है कि चाइना से हमने स्टील 2020 में बंद कर दिया था इंपोर्ट करना, तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है स्टील की, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 2022 में वापस चाइना खुला, तो जब चाइना खुला, गवर्नमेंट ने काफ़ी उनको इंसेंटिवाइज दिया। अभी जो रिसेंट बात हुई थी स्टिमुलस की, तो उसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिवाइज कर रही है अपनी कंपनी को कि वो एक कम खर्चे में ऑपरेट कर सके। तो इससे हो ये रहा है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील बहुत कम है। अब जब वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाके अपना स्टील डंप कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी कंट्री में तो डिमांड है नहीं, लेकिन इंडिया ग्रो कर रहा है, बाकी कंट्रीज ग्रो कर रही है, तो वहां पे वो एक्सपोर्ट करेंगे और वहां पे डंप करेंगे वो उस प्राइस पे, जो कि उनके लोकल कंट्री के लोकल मैन्युफैक्चरर्स नहीं बैठ पाएंगे, उतना ले नहीं पाएंगे, वो प्राइस पे दे नहीं पाएंगे अपने कस्टमर्स को। तो इसी वजह से अभी अपनी इंडिया की स्टील कंपनी है, वो थोड़े प्रेशर में है। अब वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप 25% इम्पोर्ट पे टैरिफ डाल दो, जिससे कि हम compete कर पाएं। बट जब तक वो नहीं आता, मुझे नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पे रिवाइव होगा। ये एक रीजन है, मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील भी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब बस थोड़ा-सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए आपसे। अभी हमारे एक यूज़र ने पूछा है कमेंट्स में कि क्या हमें एक्सिस बैंक को अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो प्लीज़ उसके बारे में आप थोड़ा-सा बता सकते हो? श्योर। अभी एक्सिस बैंक का रिजल्ट कल ही आया था, तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। अब एस्टिमेट्स उनके मिस हुए हैं, जितना स्ट्रीट एस्टिमेट। तो होता क्या है स्टॉक मार्केट में, कभी भी जब भी कोई अर्निंग्स आती है, तो पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन होती है स्ट्रीट की कि हमारे इतने सेल्स होगी इस कंपनी की और इतनी इसकी प्रॉफिट होगी। लेकिन वो एस्टिमेट मिस हुआ है कल एक्सिस बैंक का। और उनमें एक और प्रॉब्लम आई है कि जो उनकी एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि होता है कि लेट्स से कि आपने लोन लिया है किसी बैंक से और आप 3 महीने तक उसकी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो उनको वो एनपीए में क्लासिफाई करना चालू कर देते हैं। तो वो एक रेशियो जो है बढ़ा हुआ है, जो कि एक थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा खराब फैक्टर होता है किसी भी बैंक के लिए और किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, कि उनको डर रहता है कि जो उन्होंने पैसा दिया है, वो वापस नहीं आएगा। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से एक्सिस खराब चल रहा है। आई थिंक अगर किसी को एक्सिस बैंक ही खरीदना है, उससे उससे बेटर बैंक्स हैं एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा। अगर आप चाहें तो आप उनकी तरफ देख सकते हैं, आपको वो अच्छे दिखेंगे और आप उनकी तरफ बाइंग ज़्यादा रख सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग में। Okay. Thank you so much, Satish. Thank you so much, Gaurav. And thank you so much to all of you for being in this session. आई होप इस सेशन से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो लेट अस नो इन दी कमेंट्स, या फिर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर स्टॉक का एनालिसिस करें, तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ऑल्सो अगर अभी तक आपने लेमन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको रेगुलर बेसिस पर मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेमन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाके लेमन को भी डाउनलोड कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।